In the last class, we have started the informed search technique, and that is also known as heuristic search technique. And in this type of search techniques, we do help the knowledge about that how far we are from the goal, path cost, and how to reach the goal node. This information we do have with us. Okay, that is the informed search technique or heuristic search technique. In the case of blind search techniques, we do not have this information. Now, in informed search technique, we use a function that is known as heuristic functions to find out the most promising path. Right. Now, this function takes the current state of the agent as its input and produces the estimation of how close the agent is from the goal. सो ह्यूरिस्टिक फंक्शन का काम क्या है? इसका काम ये है कि ये जो आप जिस स्टेट में है, हमारा जो एजेंट है, करंट स्टेट को ये इनपुट लेते हैं, उसके बाद एक वैल्यू फाइंड आउट करते हैं और वो वैल्यू क्या आपको क्या देंगे एग्जैक्टली? दैट इज एक्चुअली द एस्टिमेशन ऑफ हाउ क्लोज द एजेंट इज फ्रॉम द गोल. Right. Now this heuristic method, however, might not always give the best solution, but it is guaranteed that it will find a good solution in reasonable time. Now, it is very important that you need to know the relationship between the heuristic cost and the estimated cost. We have denoted the heuristic cost by HN and the estimated cost as H star N. Okay, this is estimated cost and this is heuristic cost. Now, I told you in the last class also that H and this value should be less than equal to H star N. Okay, means heuristic cost should be less than or equal to the estimated cost. It cannot be greater than the estimated cost. That's why we are using the heuristic function. Okay, if the heuristic functions is giving you a value that heuristic cost is actually greater than the estimated cost, then what is the meaning of using it? So you should remember this equation. This might be asked in any exam, any competitive exam. Okay. Believe me, if you check the previous year question papers of the UCNet examination, you will find a question surely from this topic. The next topic is the pure heuristic search. Pure heuristic search is the simplest form of heuristic search algorithm. It just expands nodes based on this heuristic value. Now, you have to know about two lists. That is, one list is open list and another list is closed list. I hope that you guys know what does it mean by list. Probably in the data structure paper, you already familiar with this term list. Okay, this is again a kind of data structure. We keep it for organizing data in a proper way. Right. Now we are maintaining two lists. एक लिस्ट का नाम क्या है? Open list और दूसरा जो है आपका closed list. In the closed list, it places those nodes which have already been expanded, and in the open list, it places nodes which have not yet been expanded. अब जो ये expand word मैं use कर रहा हूँ, what is that exactly? See, let's take an example. मैं एक ट्री बनाया हूँ यहाँ, ठीक है? So this is a tree. अब क्या है? Suppose मैं currently इस नोड में हूँ. कौन सा नोड? ये सपोज मैं मान लिया हूँ 1, this is 2, this is 3,
This is 4, this is 5, and this is 6. I'm currently at the node number 2. तो मैं जो ऑलरेडी क्रॉस करके आया ऑलरेडी जो एक्सपांड करके आया वो नोड है कौन सा 1 क्यों because I have generated the size or range of the node 1 okay node 1 का range मैंने generate किया और वो क्या क्या है आपका that is 2 and 3 and this is known as expanded so now 1 is already been expanded so I will keep that node 1 in which list कौन सा लिस्ट में मैं रखूंगा Sir, open. Oh, sorry, close. Sorry, close sir. okay close of ৰাখিম Yes, sir. হা কাৰণ মই এটো এক্সপান্ড কৰিলো চিলড্ৰেনটো জেনাৰেট কৰা মানে কি হৈছে এটো মই এক্সপান্ড কৰিলো already okay so when I expanded it I'm going to keep it in the closed list ठीक है then समझ में आ रहा है ना अब मैं currently कौन सा नोड में हूँ नोड नंबर 2 अब मैंने नोड नंबर 2 को एक्सपांड नहीं किया मतलब जो आपको दिखाई दे रहा है 4 and 5 एक्जेक्टली ये अभी है नहीं सपोज लेट्स अस्यूम जो ओके सो अभी जो है नोड 2 को हम रखेंगे कहाँ ओपन लिस्ट नाउ यू गॉट इट राइट सो फिर से एक बार बोल देता हूँ ओपन लिस्ट जो मैंने अभी तक एक्सपांड नहीं किया है those nodes which have not yet been expanded, they will be kept in the open list. And those who have been already expanded, means we have generated the children's, then we will keep them in the closed list. On each iteration is node n with the lowest heuristic value is expanded and generated all its successor and n is placed to the closest. अब बात ये है कि आप देखो इतने सारे नोड हैं मैं जो एग्जांपल दे रहा हूँ this is just for to explain you but exactly जो tree हमें मिलेगा where we are going to use this artificial intelligence based techniques वहाँ आपके पास हजारों नोड्स भी हो सकते हैं लाखों नोड्स भी हो सकते हैं that may consist of millions of nodes there okay that's why we need machines अगर 3-4 नोड होंगे तो हम human beings can easily do that right so अभी क्या है इतने सारे नोट्स में से कौन सा नोट आप सिलेक्ट करोगे which note you will select out of this millions of notes actually there we need that heuristic function value right we will consider that node which has the least heuristic value associated with it suppose इसमें मैंने जो नोट लिया है say 1 2 3 4 5 6 7 ये जो दो नोट्स हैं ठीक है इस पे जो वैल्यू मैंने दे के रखा है लेट्स सी दिस 2 हैज द वैल्यू 1.5 and then this 3 has the value 1.56 এটা এটা वैल्यू আছে 1.5 और दूसरे में क्या वैल्यू है आपका 1.56 এতিয়া আমি কোনটো সিলেক্ট কৰিম okay out of this 2 and 2 3 which one we are going to select अब यहाँ आप क्या करोगे कि इन दोनों में से एक कंपैरिजन करोगे कि कौन सा नोड का ह्यूरिस्टिक वैल्यू क्या है कम है या ज्यादा कम है ठीक है जितुर कम रहा एग्जैक्टली वेरी गुड सो जिसका वैल्यू कम है मैं वो सिलेक्ट करूंगा ये कंफ्यूजन में मत रहना कि मैं जो बड़ा वैल्यू होगा वो सिलेक्ट करूंगा ना वी आर गोइंग टू सिलेक्ट ओनली दैट नोड व्हिच हैज द लीस्ट वैल्यू तो आप मुझे बता सकते हो कि ये जो 2 and 3 है এই দুটাৰ ভিতৰত কোনটো সিলেক্ট কৰিম 2 select করিম sir very good because it has the heuristic value as 1.5 and that 3 has the heuristic value 1.56 so 3 is greater than 2 that's why I am selecting 2 so you already got it so on each iteration is noted n with the lowest heuristic value is expanded and generates all its successors and is placed in the closed list जब मैं ये जो लाइन हमने लिखा है
कि it generates all its successor and place to the closed list. मतलब क्या है, 2 को सिलेक्ट किया, इसका जो सक्सेसर है मैंने जनरेट किया 4 और 5 चिल्ड्रंस जो मैंने है जनरेट किया, तो आप जो है 2 को मैं प्लेस कर दूंगा कहाँ, क्लोज लिस्ट में। इसी तरह ये हर एक नोड को एक्सपांड करते जाएंगे until we reach the goal state. So that is the pure heuristic search. In brief, I'm telling you that in pure heuristic search, you can consider this is the simplest form of heuristic search technique. We considers only the heuristic value here. उसके अलावा और कोई भी फंक्शन में यूज नहीं कर रहा हूं. I'm considering only the heuristic function value. Then we are maintaining 2 lists. One is open list and another is closed. Open list contains those nodes which have not yet been expanded. Closed list, we are keeping those nodes which have been generated. And each iteration, on every iteration, the node with the lowest heuristic value will be considered and its successor will be generated, and we'll keep it in the closed list. In this way, it will continue these things until the goal state is found. Now, 2 important informed search techniques are best first search algorithm and next one is A star algorithm. एक आपका है बेस्ट सर्च टेक्निक्स और जो नेक्स्ट है आपका क्या, A star algorithm. And both of these 2 search techniques are very popular. Almost when you encounter some AI based things, then you might find these algorithms being implemented there, mostly the A star one. So why not let's discuss about that. So सबसे पहले मैंने जो कंसीडर किया है that is best first search algorithm. देखना यहाँ बड़ा अक्षर में मैंने लिख के रखा है greedy search. क्या आप में से कोई मुझे बता सकते हो कि what does it mean by the term greedy search technique? Remember, I have explained this term in some of my previous lectures. Yes, sir. Yes, please go ahead. অকমান কৈ দিব পাৰিবা greedy search মানে কি হয়? Okay. Okay, Nirmay. So greedy search মানে হৈছে মই আকৌ এবাৰ কৈছো प्लीज इस बार भूल मत जाना आप लोग, ठीक है? ये करंट जो सॉल्यूशन है, करंट जो स्टेट में सॉल्यूशन मिला है उससे वो सेटिस्फाई नहीं, ऑल्दो दैट इज द सॉल्यूशन but still it is not satisfied with the current one. It always tries to optimize its performance. वो संतुष्ट नहीं, it is not satisfied. उसको और बेहतर रिजल्ट चाहिए. Okay, it tries to find better and better solution. Are you getting me? So that is a greedy search tactic. क्या बोला, सबको समझ में आया? एक सॉल्यूशन आपके पास है, आप मतलब अगर मैं सिंपल अर्थ में बताऊं, आपके पास 5,000 है सपोज, you want more, but आपको with that 5,000 you can do everything in a month, but you want more. So that the same thing here, it has the solution, but it again tries to find a better one, right? Now let's discuss the steps involved here. Greedy best first search algorithm always selects the path which appears best at that moment. It is a combination of depth first search and breadth first search algorithm, but don't confuse that. Depth first search technique and breadth first search techniques both belong to blind search technique. याद है ना, मैंने डिस्कस किया था ये सब चीज, depth first search technique Yes, and sir. breadth first search technique.
और ये सब था Yes, आपका. sir. Exactly, good. So they are blind search techniques, but best first search is informed search technique. But this way से जिस strategy ये follow करता है वो एक exactly the combination of depth first search and breadth first search with the given information. Right. So it uses the heuristic function and search. Best first search allows us to take the advantage of both of them. So depth first search का advantage. Can anybody tell me at least one advantage of each of them? Depth first search and breadth first search. Depth first search का एक advantage बता दो मुझे जल्दी से. क्या हो रहा है? You should not forget about these things. ये बहुत बार पूछा गया, मैं बार बार बोल रहा हूँ आप लोगों को. ठीक है, अब जब भी कोई एग्जाम फेस करोगे यही सारे क्वेश्चन पूछते हैं. इसलिए एटलीस्ट मेरे जो सब्जेक्ट्स हैं, जिस सब्जेक्ट जैसे कि आप लोगों को डीबीएमएस पढ़ाया था तब भी आपको बताया था कुछ इंपॉर्टेंट चीज. अभी एआई पढ़ा रहा हूँ तब भी बोल रहा हूँ कि क्या क्या इंपॉर्टेंट है. एटलीस्ट वो सारे चीज भूलना मत. द फर्स्ट का एडवांटेज ये है कि ये कम समय पे आपको सॉल्यूशन दे सकता है. हाँ, इन द कंडीशन दैट जिस ब्रांच में वो सर्च कर रहे हैं उस ब्रांच के डेप्थ तक जाते हैं. Okay, it tries to find a solution that wise. So it may give you the solution in shorter period of time in comparison to other search algorithms. But in the case of breadth first search algorithm, what happens is that if there is a solution in the tree, अगर solution है तो आपको मिलना 100% गारंटी है. You are surely going to get a solution if that is there in that tree. But हाँ, इसका complexity जो है, that may be increased, means as the search is means going means growing, what I can say, level wise, means one level, second level, third level. If it is grows like that, if it is growing like that, obviously the complexity will be increased. But you are surely going to get a solution. Okay, these are the advantages of depth parsers and breadth parsers. And this base parsers algorithm combines both of them and trying to take the advantage of from each of them. বুঝি পালা সবে? So with the help of base parsers, at each step, we can choose the most promising node. In the base parsers algorithm, we expand the node which is closest to the goal node, and the closest cost is estimated by the heuristic, that is fn is equal to zn. अब जो zn है याद रखना, zn is the estimated cost from node n to the goal. आपने जोरहाट से स्टार्ट किया था, आप गुवाहाटी जाना है आपको, तो बीच में कौन क्या जगह है, सपोज नौगांव है. ठीक है, तो अब नौगांव से जो गुवाहाटी का डिस्टेंस होगा, कॉस्ट लगेगा नौगांव से आपका गुवाहाटी पहुंचने में, दैट यू कैन कंसीडर एज द सीएन वैल्यू. मतलब नोट से, मैं ये नहीं बोल रहा हूँ इनिशियल से, करेंट नोट से जो गोल तक पहुंचने का जो कॉस्ट है, दैट विल बी गिवन बाय दिस वैल्यू. ओके, डोंट फॉरगेट इट. The greedy based first search algorithm is implemented with the help of priority queue. अब आप लोगों के लिए पहला क्वेश्चन है आपका कि what do you mean by priority queue? Remember, today our class is up to 4 p.m. So you will utilize the time to solve the question that I will give it to you. Is it okay for everyone? Yes, sir. Yes, sir. I said everyone. I have heard only two. What about the others? Yes, sir. Surya Sobekwa. Yes, Yes, sir. Yes, sir. Okay, please utilize this. যিখিনি কথা কৈ আছো তোমালোকৰ বেনিফিটৰ কাৰণে কৈ আছো. Okay, so priority queue মানে কি এবাৰ চাই লবা.
Then let's discuss the steps involved in the space for search algorithm. Let me clear this. Step 1. Place the starting node into the open list. मैंने अभी आप लोगों को बोला था कि दो लिस्ट में कंसीडर किया था ना, ओपन एंड क्लोज. यस और नो? और तेतियाলৈকে সবে বুজি পাইছিল ওপেন লিষ্ট মানে কি, ক্লোজ মানে কি? यस ना? सो सबसे पहले आपने क्या किया? प्लेस द स्टार्टिंग नोड इनटू द ओपन लिस्ट. स्टार्टिंग नोड को मैंने ओपन लिस्ट में रखा है. ठीक है. स्टेप 2. इफ द ओपन लिस्ट इज एम्प्टी, स्टॉप एंड रिटर्न फेलर. अब आप लोगों को ऐसा लगेगा कि प्लेस द स्टार्टिंग नोड इनटू द ओपन लिस्ट, और अभी सेकंड स्टेप में बोल रहा हूँ ओपन लिस्ट. देखो ये एल्गोरिथम है, and you know that the algorithm actually trains the machine and asks the machine to do some tasks, right? So step 2 is means that if we need to check the open list, if there is no node in the open list, then can you go ahead with the search? ओपन लिस्ट में कोई मतलब वैल्यू है ही नहीं, नोड है ही नहीं, क्या आप सर्च कंटिन्यू कर सकते हो? No, sir. No. No. So you have to stop and return failure. Then step 3. Remove the node n from the open list, which has the lowest value of hn, and place it in the closed list. So आप क्या क्या आपने ओपन लिस्ट में से वहां पे तो it may be consisting of several nodes, right? Now you will select that node which has the least value of hn, and you'll place it in the closed list after evaluating it or after expanding it, which is in the step 4. So expand the node n and generate the successor of node n. Right. Now step 5. Check each successor of node n and find whether any node is a goal node or not. If any successor node is a goal node, then return success and terminate the search, else proceed to step 6. Now you have done two things. First, you have expanded the node n expand किया, तो आपने क्या किया? उसका successor generate किया. Now वो सारे successors में से आपको ये find out करना है कि क्या उसमें से कोई goal node है. अगर है, goal node है, तो इसका मतलब क्या है? Yes, you got it what you are searching for. So return success and terminate the search. Else otherwise, अगर आपको ये नहीं मिला, सक्सेसर में से कोई गोल नोड है नहीं, तो आप क्या करोगे? स्टेप 6 में आगे बढ़ोगे. ठीक है. यू आर गोइंग टू एक्सिक्यूट द स्टेप 6. Step 6. For each successor node, algorithm checks for evaluation function fn and then check if the node has been in either open or closed list. If the node has not been in the both list, then you need to add it to open list. तो अभी क्या करेंगे? सक्सेसर नोड पहले तो हमने देखा कि गोल नोड है या नहीं है, तो अभी स्टेप 6 में है. अब स्टेप 6 में हमने उस पर्टिकुलर गोल नोड का इवैल्यूएशन फंक्शन देखा. ठीक है. इवैल्यूएशन फंक्शन मतलब क्या है? उसका ह्यूरिस्टिक वैल्यू हमने फाइंड आउट किया. वो या तो ओपन लिस्ट में होगा या तो क्लोज लिस्ट में होगा. अभी इन दोनों में ही नहीं है और हमने इवैल्यूएट कर लिया है इसका ह्यूरिस्टिक वैल्यू, तो हम क्या करेंगे? उसको ओपन लिस्ट में रख देंगे. मतलब हम अभी ओपन लिस्ट में और एक नोड आ गया है और एक नोड जोड़ दिया है आपने. सो यू हैव एडेड वन मोर नोड टू द ओपन लिस्ट. So that's what actually step 6 does for you. Then coming to the step 7, go back to the step 2. Step 2 क्या बोला था हमें? कि क्या ओपन लिस्ट में और नोड है या नहीं? You are going to check that. Remember, जब तक ओपन नोड में लिस्ट में नोड है तभी तक आप कंटिन्यू कर पाओगे. So you go back to the step 2 and you will check it whether this list is empty or not. If it is empty, then you will stop and return failure. हमें
अपना सर्चिंग नोड नहीं मिला तो हम क्या कर देंगे, यूजर को एक फेलर मतलब रिटर्न कर देंगे, ठीक है, एंड वी विल स्टॉप देयर. So these are the steps involved in the base parse search algorithm. मैं इससे आगे आज अभी और नहीं बढ़ूंगा. आप लोगों के लिए दो काम दिया है. पहला क्या दिया था याद होगा, प्रायोरिटी क्यू क्या है. With explanation you will try to find it, you will write it. Then second, जो बेस पार्स सर्च एल्गोरिथम मैंने अभी पढ़ा है, इसका हर एक स्टेप को लिख के फिर से एक्सप्लेन करने की कोशिश करोगे आप लोग. ठीक है, ये दोनों भी कर लोगे तो आई विल बी सेटिस्फाइड दैट या यू हैव डन टुडेस वर्क एंड इट इज कंप्लीट. ओके, बट ध्यान से एक भी स्टेप मिस नहीं होना चाहिए. Yes, sir. Okay, so do that sincerely. Do not skip that. I repeat, do not skip that. With that, I'm stopping right here. Thank you.